That is another reason why civil services or IAS examination, UPSC examination has this disproportionate attraction. होना नहीं चाहिए किसी डेमोक्रेसी में इतना, मैंने पहले ही बताया. In any democracy, getting a government job should not be a matter of that much pride as it is in our country. किसी अच्छी डेमोक्रेसी में नहीं है. आप जाके देखिए, आप में से तो कुछ लोग एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी गए हैं या जाते हैं. अमेरिका जाके पता कीजिए, वंडरफुल डेमोक्रेसी. क्या वहाँ पर सिविल सर्विसेज में आना कोई इतनी बड़ी तोप बात है? नहीं है. लोग जाते हैं 4 साल के बाद छोड़ के आ जाते हैं. And many other European countries where the democracy is strong, getting into civil services is not something कि उसके लिए जीवन मरण का सवाल बना लिया जाए as it is done in our country. Why? Because this opportunities for vertical movement this particular service is offering, unfortunately, it is not being offered by many other services. Unfortunately. Having said all this, which in my opinion should be dissuading you from getting into civil services, but we cannot change society overnight. तो आप जिस समाज से आ रहे हैं उस समाज से या आपकी व्यक्तिगत इच्छा से अगर आप सिविल सर्वेंट बनना ही चाहते हैं, then I'll say that it's not about examination. It's about choosing a particular kind of life. So please plan कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे 5 years down the line, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल बड़ी मजेदार बात है कि ये सारे बच्चे जो कहते हैं मेरे बचपन से मन था सिविल सर्विसेज करने का, उनसे पूछते हैं अच्छा क्या करना है सिविल सर्वेंट बनके? सर मसूरी जाना है. जिनको नहीं पता, मसूरी वो जगह है जहां पर सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है. लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? क्या मसूरी जाना इतना बड़ा सपना हो सकता है कि आपने इसके लिए अपना 2 का पहाड़ा से जिंदगी शुरू की? याद है ना, ऐसे ही सेट कि ट्रिकल डाउन है. At the age of 27, 26 or 24, you want to become a civil servant. You want to join this national academy. And that's why पहली क्लास में आप पर प्रेशर है कि बेटा जौहर के पास मत जाओ, तुम्हें तो IAS बनना है. जौहर पता है कितना होगा? पता है जौहर कि नहीं? तालाब, गांव का तालाब. That's a fun place, right? So what I'm trying to say is very, very simple. It is true that unfortunately we are in a very competitive world. हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आप लोग 2,20,000 में से 400, 300, 500 जो भी चुने गए उनमें से हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि हमने तो इतना मुश्किल एग्जामिनेशन पहले ही पास कर लिया. IAS वालों को तो आपको बुलाना चाहिए कि आ जाओ बेटा. लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता. न केवल ऐसा नहीं होता है, बल्कि सच्चाई है कि आपके लिए भी ये एग्जामिनेशन इतना सा भी आसान नहीं बनता. इट रिमेन इक्वली डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल. The students who clear IIT JEE advance get into computer science in IIT Mumbai or IIT Delhi, which is considered the highest branch. और वो जब बाहर निकलते हैं 4 साल बीटेक करने के बाद with good CGPA, they are at par with a BA student coming from Saharanpur or Meerut, right? At least in terms of examination. Both of them will have to prove themselves in that particular examination in an equal way. Same syllabus होगा, सब कुछ same होगा. And interestingly, you'll realize that despite the fact that you cleared IIT examination or you cleared Vidyagyan entrance examination, for you that particular sample will be equally competitive. आपका competition उससे जरा सा भी कम नहीं हो सकता. Yes, the difference is in those 3 rings which you are carrying. आप अपनी पर्सनैलिटी में जो वैल्यूज कैरी कर रहे हैं वो आपके पास एडेड एडवांटेज है. इट इज़ लाइक यू हैव एडिशनल वेपन और टूल विथ यू, बिकॉज आपको 5 बजे उठाया गया था योगा के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए आप चिढ़ते रहे, लेकिन आपको 5 साल तक वो उठाया गया. इस वजह से आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि दूसरे बच्चे की तुलना में आपके लिए 5 बजे उठना आसान है, राइट? इफ वी लीव दिस स्लाइट एडवांटेज असाइड and it is not good enough,
Why? Because again, you will be appearing with a candidate 11 lakh selected candidates, जिन्होंने रात दिन सपना ही लिया है. उनको बार बार ये गलत फहमी है कि बचपन से वो IAS बनना चाहते थे. So the competition level will remain the same, and competition level is not because they want to select the best candidates out of it. That's the biggest fallacy anybody can give. कि UPSC का endeavor ये है कि इन 11 लाख में सबसे अच्छे 800 लोग चुनने हैं. नहीं है भैया. सबसे अच्छे लोग तो मेरी ओपिनियन में बहुत बार प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं. That is not the purpose. जो आप में से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? Yes. So you need to understand the structure of UPSC is not like a corporate recruiting agency. No, it is not. It has a dual purpose. One obviously is कि देश चलाना है तो कुछ ऑफिसर चाहिए ही चाहिए, तो अच्छे ऑफिसर चुन लीजिए, अच्छी बात है. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पर्पस क्या है? ये पर्पस है, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का जब विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हुआ तो आपके मोहल्ले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? याद कीजिए. यू विल रियलाइज कि आपके मोहल्ले में ये बात होने लगी कि बहुत अच्छे स्कूल में बच्ची का या बेटे का एडमिशन हुआ है. बाकी लोगों ने कहा हमें भी कोशिश करनी चाहिए. कुछ जगह पे तो बाकायदा इसके लिए कोचिंग शुरू हो गई होगी, या आप ही लोगों से पूछें बेटा क्या पढ़ लें. यू गेट इट? व्हाई? बिकॉज दे समहाउ गॉट दिस ड्रीम and faith in the system that if they work hard, they'll be able to get those privileges which you got. Same purpose is with the UPSC. 800 लोग तो वो किसी भी रोबोटिक टेस्ट से निकाल लेंगे जिनसे देश चल जाएगा. ऐसे कोई बहुत तोप लोग नहीं होते. आप उनसे बात करेंगे आपको समझ में आएगा. ट्रेनिंग से जो फर्क पड़ गया. They are not the best brains. Best brains are in universities, in research labs. By definition, Indian administrative service officers are supposed to be generalists. It is the same thing as we say jack of all. They are not the best brains to be selected. But the purpose of the UPSC is slightly different, and it is political. Purpose is that to continue a huge democracy like ours, we want that the youth of the country should have faith in the system. That there exists a path in the republic where if you are nobody, work hard, can become a collector someday. This faith is important to run the institution, to run the country. If this faith is gone today, what will happen? Just think, the youth will be, क्या होगा? सारा का सारा जो युवा वर्ग है वो निराशा से, क्रोध से भर जाएगा. अभी भी सिलेक्शन वही 700-800 का होगा, लेकिन जिनका नहीं भी होगा वो क्या मान के चलेंगे कि यार सिस्टम ने तो कोशिश पूरी की थी, सिस्टम ईमानदार था, जिसका सिलेक्शन हुआ मुझसे अच्छा था इसलिए हो गया. उसको ये अनुभव, ये तसल्ली रहेगी कि मुझे मौका मिला था. आप समझ पा रहे हैं? टू हैव दिस फीलिंग इन द एंटायर पॉपुलेशन कि इट्स अ रिपब्लिक, यहां आपको मौका मिलेगा और ईमानदार मौका दिया गया. That is the primary goal of having institutions like UP, not getting 800 good officers. So UPSC or the democracy will not collapse if out of 800, 1 to 5 are absolute dumb, बिल्कुल डफर हैं, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. What I'm saying is that you need to understand why it is so important for this entire country to be engaged in this national hobby of preparing for civil services. Because it legitimizes the entire democracy. If you are a political science student, you understand why this legitimacy is so important. Because once this legitimacy is gone, then democracy cannot survive. But I'm coming back to the same point. If you know that the entire system is not necessarily to pick the brightest, the entire system is to have the legitimacy, and you already find the state legitimate, you already find the democracy legitimate, you need not unnecessarily be part of this project.
राइट? शादी होती है, गए हैं, शादी में जाने का मौका मिलता है यहाँ पे कि नहीं? छुट्टी मिल जाती है चाचा जी के बेटे की शादी पर? नहीं मिलती। तो जब शादी में जाते हैं तो शादी में काम किसका होता है? दूल्हे का और दुल्हन का। बाराती क्यों जाते हैं? टू लेजिटिमाइज द शादी, राइट? दावत खाने जाते हैं, इस पॉइंट टेकन। लेकिन समाज को क्या जरूरत है? वाई डू दे नीड एन एंटायर बारात फॉर टू person deciding to live their life together? Why do they need the entire barat? Barat is required for providing legitimacy to this relationship, right? That is to give the social recognition to this particular process. Most of us get into civil services as barati. दूल्हा दुल्हन कोई और हैं, right? And you get into it because you believe that you are doing a very important task. It is important. But don't be under any impression that it is something that you should die for. It's not worth dying. Clear? बात समझ में आ रही है? कि सर इतनी दूर से आप आए और आकर हमें लगातार कहा कि क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर 12 साल तक टीचर्स डीलर नहीं करा पाए तो आप 12 मिनट में कैसे करा दोगे, राइट? बट एज अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ टीचर, एज अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली टू पास ऑन what I believe is important. And this, what I'm saying, is my life experience. That's what I'm sharing it. I'm not at all saying that this is not a good job. It's a wonderful job. It gives you opportunity to change lives. Once you are a civil servant, you're an IAS officer, you have entire district and entire resources of the district at your disposal. आप में से वो बच्चे जिनका आप में तो खैर सबका हुआ, लेकिन जिनका विद्या ज्ञान परीक्षा क्लियर नहीं हुई, they also deserve a better life full with opportunities, right? An IAS officer probably can arrange for those, even those who could not clear the Vidya Gyan entrance, right? So that is definitely there. And also the bureaucracy is ultimately the steel frame of this country. We may have hundreds of problems with the country, we may have hundreds of grievances, but still we love our nation, don't we? We are because of it. So if any structure is protecting the integrity of the country, that should be important. Civil services or bureaucracy is one such structure. So you should have respect for it, no doubt about it. They are doing wonderful work. सुबह से शाम तक, रात तक काम कर रहे हैं, and this talk of saying that all of them are corrupt is wrong. A system cannot run if all of them are corrupt. नहीं होता. सिस्टम अगर चल रहा है तो इसका मतलब देयर आर पीपल, फॉर एग्जाम्पल देयर आर पीपल विल से कि उत्तर प्रदेश में स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, बट आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस टीचर्स हु वर्क वेरी हार्ड फॉर यू, राइट? एंड दे आर लाइक एनी अदर टीचर. सो सिमिलरली इन द सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज नॉट करप्ट, एंटायर सिस्टम इज नॉट लेजी, एंटायर सिस्टम इज नॉट रिडंडेंट. Now coming to the specifics, कि सर ये सब हो गया, बताइए परीक्षा देनी है, क्या करना है? My advice is, once you are sure by the litmus test I have given that you want to become a civil servant, then you should have a plan and you should have things very clear. Please understand that a lot of one of the major culprit of pushing everyone to the civil services is people like me, who claim to be motivational speakers. वो जाते हैं और you can do it, follow your passion, चीख चीख कर बताते हैं. Don't fall into that trap. Don't make everybody who cleared civil service examination as your role model. You cannot have 800 role models per year, right?
There's no way you can have 800 role models per year. So effectively it means there are people who cleared civil service examination but are not worth becoming role models, right? And also, everybody has different path of success. You cannot follow the path of success of a Sanskriti school student. Their privileges are different from your privileges. Their deprivations are different from your deprivations. You count your privileges and of course identify your deprivations. And on the basis of this, find out what is the best path, what is the best plan you can have, and it will not necessarily be the plan of the last year topper. No, it will not be. Because unfortunately, because of this rise in the social media, now everybody is coming up with the plan, strategy video. The day results are declared, अभी 22 तारीख को शायद रिजल्ट आएगा, 22-23 तारीख में, 22 को रिजल्ट आएगा, 23 तारीख को आपको टॉपर का स्ट्रेटेजी वीडियो दिख जाएगा. Don't follow that blindly. In fact, do nothing blindly. Have your custom-made plan as per your overall personality and then stick to that plan. Also, always have a plan B. I told you why. Because this is a huge misnomer that the best 800 are selected. No, 800 are selected. Not necessarily the best 800, right? Most suitable may be suitable for that particular job, but not necessarily best 800 or 1000, whatever the figure is. So always have a plan B. It could be academics, it could be research, it could be entrepreneurship, it could be anything else. Always have a plan B. Saying that having plan B means you're not focused, you're not confident is fallacy. ये fallacy का फायदा किसका होता है? कोचिंग इंडस्ट्री को होता है, right? And then love your failures as much as you love your success. In fact, we learn more from failures than we love from success. क्योंकि सक्सेस तो जैसे ही आपका पीडीएफ में नाम दिखाई दिया, तुरंत आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो, कह दो हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़े हो, वगैरह वगैरह. अचानक आप जमीन से ऊपर चलने लगते हैं. आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज इट नॉट. जितने लोग आप यूट्यूब में रहते देखते हैं, आपने देखा यंग ब्यूरोक्रेट अभी 2 साल पहले 4 साल पहले सेलेक्ट हुए हैं और वो अपने साथ एक कैमरा लेके चल रहे हैं. वो दिखा रहा है कि उसने उसको डांट दिया, उसने सबऑर्डिनेट को डांट दिया. आप समझ रहे क्या छवि बनाने की कोशिश हो रही है? Within 4-5 years of their career, they're trying to pose themselves as heroes. They are not. They are only civil servant. They are government servant, earning less salary than your teachers. Trust me. Look at the salary structure of the IAS officer. They're in level 10, right? Which is around 67,000, 75,000 rupees per month. It is good salary, definitely good salary, but it is not the best. आपके HCL के लोगों से तो आपको मिलना पड़ता होगा. All of them earn more than that. All of them. Right? So it's not a very lucrative job that way. But that's not my concern. My concern is that don't make it as the only option in your life. I'm not asking you to be defocused. What I'm asking you is to be honest with yourself, one, and learn from your mistakes. That's the best thing you can give to yourself. Ability to learn from your own mistakes. Now, last one, before I wind up. Ultimately, what is going to matter is not whether you became a civil servant or not, what kind of a civil servant you were. अगर आप दिल्ली में सरोजिनी नगर की मार्केट में या उसके पार्क के आसपास घूमे और ऐसे करके तेजी से एक पत्थर फेंके, तो ज़्यादा संभावना ये है कि वो किसी न किसी सिविल सर्वेंट के जाके लगेगा. Civil servants are available to a penny. And once they retire, nobody asks them. कौन थे, क्या किया उन्होंने? नहीं. जब तक सीट पर हैं, तब तक पावर है, ठीक है? The only thing that's going to matter is what kind of a human being you are.
That is the only thing in the life that's gonna matter at the end of the day. So never trade for becoming good human being and becoming successful. That's not a trade-off. That's not something that you should even consider. Right? Success is always temporary. कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Becoming good human being is important. And how can you become a good human being? As I said, count your privileges and then make sure that you pay back whatever was the source of privileges. You guys are alumni. This institution built you the way it built you. And you know that you had the privilege of being in this institution. I had the privilege of being in Delhi University despite studying from a municipal corporation school. And that's why I go hop from college to college, all public funded institutions, and tell them best I have, because that is my way of paying back for the privileges I got. Similarly, please pay back to the society for the privileges you had. At the same time, you had deprivations. Please find out why these deprivations you were subjected to. You were subjected to this deprivation because economics के student जानते हैं every deprivation has underlying discrimination. Deprivation कहाँ से आता है? Discrimination से आता है. आप लड़की की तरह पैदा हुए, so society ने आपके खिलाफ discrimination करना शुरू किया, and that's why you were deprived in terms of getting full nutrition. भाई को ज़्यादा मिला, आपको कम मिला. पड़ोसी के लड़के को ज़्यादा मिला, आपको कम मिला. Getting? कहाँ से आ रहा है deprivation? Because of the discrimination. Every deprivation, class का, caste का, community का, religion का, किसी भी चीज़ का deprivation will come from the discrimination. So in the same way as you have to pay back for the privileges you have this responsibility to look for the discrimination that is causing deprivation to many and try and root that out. You may not be in position to do it today, but if it is there in your tree rings, wherever you are, in the corporates, your NRI, your civil servant, whatever you are, you'll remember that you had deprivation because of certain discrimination. So as long as society has discrimination, it will have many like you who will be deprived. Right? So that is the last thing I wanted to say. Count your privileges, look for your deprivations, and hence the discrimination. Work against discrimination, pay back for the privileges. That's the best thing you can do. Thank you very much for listening to me.